थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट। किसी को बाइक सीखना है तो प्लीज़ पक्का सिखाएंगे। तो आप भी होंगे मोटर जीपी के रेसर। आप बाइक चलाओगे? Thank you, Parul. I think it was wonderful. I was just listening to नासिर भाई और जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जेन्युइनली इंडिया में अगर हम देखते हैं कितने एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ हमारे वर्ली सी फेस में यहाँ पर, बिकॉज इट इज़ मतलब लोगों में इंटरेस्ट बहुत है, बट आई थिंक उसको सपोर्ट करने के लिए वो प्लेटफॉर्म नहीं है. सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज़ ऑसम, एंड अगर ये आता है यहाँ पर तो आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा. हंसा. Well, I like one point which he said that नासिर जी कि बाइक सब चलाते हैं और हम लोग हमेशा देखते हैं कि जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमें बाइक से डर लग जाता है, अरे यार कौन निकला यहाँ से, जस्ट बिकॉज उनको शो ऑफ करना होता है कि मेरे पास बाइक है और मैं चला रहा हूँ. तो वो सेफ्टी का जो गेयर है वो जो ध्यान में नहीं रखते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीबडी शुड टेक केयर ऑफ इट. एवरी टू व्हीलर पर्सन शुड डू दैट. तो आपको अगर रेसर बनना है, देयर आर ट्रैक्स, आप उसको प्रोफेशनली करिए, सीखिए और जाइए. व्हाई डोंट यू ब्रिंग ऑर्डर्स टू इंडिया? दैट्स व्हाट आई विल से, रादर देन डूइंग रेसिंग ऑन द रोड्स एंड मेकिंग अदर पीपल्स लाइफ हैजार्डस. वो नहीं होना चाहिए उसके. एंड इंडिया का नाम भी रेसिंग में आए, व्हाई नॉट? ऑफ कोर्स, लाइक आई एम हैप्पी. अभी जैसे एशिया के अंदर इतने सारे मेडल्स आ रहे हैं जिनको हमने कभी हराया नहीं, उनको हम हरा रहे हैं. वी शुड मेक नेम इन जीपीज आल्सो, व्हाई नॉट? ऑनेस्टली आई थिंक एज अ वुमेन पर्सनली स्पीकिंग मुझे कभी बाइक में एक डर रहा है, जैसे हाउ शी सेड कि कि बाइक का सोचकर ही एक लगता है डर. तो कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं कि ये अवेलेबल है मेरे लिए, ये मुमकिन है, मैं कर सकती हूँ. एटलीस्ट पर्सनली मेरा कभी ध्यान नहीं गया, बट मे बी अगर ऐसी फैसिलिटीज़ है, ऐसी एकेडमी होगी, ऐसी ट्रेनिंग होगी तो मे बी मैं भी सोच सकती हूँ इस बारे में. So yes, it is a very good initiative coming down here, and I think it's high time we India also have us. Yes. Yeah, so I just feel कि बचपन से मेरे घर में जैसे फ्रेंड्स वगैरह आते थे, देवर सबके पास बाइक हुआ करती थी, क्योंकि तब एक होता था कि बाइक है हमारे पास में. तो ऐसे मुझे भी बाइक सीखनी है. तो आई यूज्ड टू राइड बाइक, मतलब बुलेट तक किया है, पर इतने सालों से छूटने के बाद में अभी ज़्यादा थैया हो गया मेरा भी बाइक का. बट येस, आई वुड लव टू. और जो ये कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज एजुकेशन हाउ टू राइड अ बाइक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. नट खरीदने से आपको सहूलियत नहीं मिलती है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, जो भी बहुत ज़रूरी, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. Yes. So I'm very happy this initiative is there. So and लड़कियाँ बाइक चलाते हुए हमेशा बहुत अच्छी लगती oh हैं. yeah, oh yeah. I would love to. I would love to sit on a book. I mean, this bike which is outside is also very. Yeah. I would love to sit on that and ride. आप तो बाइक पे बैठे कि कितना आपको डरते हो? देखिए क्या है ना, अदाकारा को बस बाइक मिल गई, एक्टिंग कर दो, हाँ चला लिया, फीलिंग ले ली, बहुत बढ़िया बात है. जब एक्चुअल करने को मिलेगा तब पता नहीं क्या होगा. आई होप आई एम सेफ. या वो सेफ्टी मुझे नहीं लगता कि वे यहाँ बॉम्बे की और इंडिया की सड़कों पे चला पाऊँगी, क्योंकि मुझे डर रहेगा. जब मैं गाड़ी में बैठ के डर जाती हूँ कि कोई बाइकर निकल रहा है, तो आई डोंट नो व्हाट टू से. बट या अगर मुझे सीखने का मौका मिलेगा और अगर नासिर जी सिखाएंगे तो व्हाई नॉट, आई विल डेफिनेटली jump on the thing and learn it. Thank you so very much. Thank you everybody. Thank you. Thank you. Superbike racing being announced to come to India
think it's amazing. I think it's so great that so much of this is now coming to India. I think the world is looking to India now for, in terms of fashion, in terms of sport. I think it's so exciting. This is one of the most exciting times to be in India. I remember many years back, when I started doing advertising, I used to be one of the few girls in India who used to ride a bike. I've done a lot of ads where I used to ride a bike, and over the years I've seen so many young women have taken to biking. So many young women are, getting onto their bikes and being, avid bikers. It's really cool. I think it's a really cool sport, and I'm very, very excited. आप अपने आप को फ्यूचर में देखते हैं टीना टू पार्टिसिपेट इन समथिंग लाइक दिस बिफोर बाइकिंग एंड रेसिंग एंड लर्निंग इट Yeah, so my only worry until now used to be that biking is not, because you're doing it on the road, it's not very safe. But I think with something like this, something like a DSTK, because it's going to be done, with all the safety protocols in mind, I think I would love to give it a shot. for women out there what message would you like to give out we see a lot of aspirant women also who want to try the sport get into it Yeah, but they yeah. do have not a nod from family because Yeah. I think in India we still consider this as a taboo women will not ride bikes and Yeah. it's too heavy for them what would you like to say I think, this is what I've told women all my life. My first rule in life is to not listen to what people say. Don't listen to what your family say. Don't listen to what your neighbors say, what your chachi, mami, whatever says. Do what your heart feels like. Go after your heart, because it's one life. You only live once. Do everything you want to in this one life. very well said Tina thank you so much Thank you. any question anyone Thank you. लाइट मैम यहाँ पे पुनः मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे यहाँ बिजली की और लाइट लगी Should I come in the front? यस 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 मैम It's too close, huh? मैम यहाँ पे देखिए क्या है कैसे representing India this year? I'm proud. I think it's a very proud moment, for such big brands to come and present themselves in India. I think all should come in India, and they all should. But yes, now that we're talking about bikes, I mean, I'm a big fan of bike, by the way. So my college days have only. So I used to ride those days. अभी तो खैर मैं खुद का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखती हूँ. But yes, I'm just happy to be a part of this amazing celebration. आप बाइक करते हैं एक ज़माने में हुआ, कॉलेज के दिनों में हुआ था. तो टोटल रफ एंड टफ लाइक अ टॉम बॉय. हाँ, वो मैं थी. तभी मेरे बाल छोटे से थे. अभी खैर my school friends they met me after some time and they were like, तो पूनम पांडे से लंबे बाल कैसे? जैसे आपका कट मारते हैं अपने कट पर मारते दिखाई मतलब बड़ी हरकतें की. आई डोंट थिंक मुझे बोलनी चाहिए कैमरे पे. हमारे माय कॉप्स आर आल्सो वाचिंग दिस. सो नहीं, मैं बड़ी सीधी सादी बड़ी शरीफ लड़की हूँ, तो आई डोंट डू एनी सच सॉर्ट ऑफ थिंग. Bike has given us very much safety measures. So what are your views on that? Like in India we don't have that education for the bikers. So what are your views? See, that is something I don't like, honestly. With respect to those Indians जो हेलमेट पहनकर चलाते हैं, बट ज़्यादातर लोगों को हेलमेट, मतलब उनके लिए हेलमेट ना पहनो, इट्स अ वेरी कूल थिंग. दे नीड टू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट कूल. कॉलेज के दिनों में मैंने तो खैर मेरे बहुत ही करीबी दोस्तों को देखा, विद बाइक एक्सीडेंट्स एंड स्टफ, एंड आई एम ग्लैड दैट दे आर कमिंग विद सेफ्टी मेजर्स, एंड आई थिंक everyone should take care of their safety, because
जान है तो जहान है नहीं। अच्छा मैम, तो आप कितना सेफ्टी यूज करते थे जब आप बाइक चलाते थे? मैं सीट बेल्ट लगा के बाइक चलाती थी। हम जैसे लोगों को ज़रूरत पड़ती है सीट। Okay, ma'am. So when you have said कि आप बाइक चलाते थे, so what were your favorite models? ये हम बाद में बात करते हैं। मतलब मैं नहीं चाहती मुझ में भी कुछ भी मैं I'm finding I've done all my मस्तीज in my life. I don't think किसी भी लड़की ने उतनी ज़्यादा हरकतें की जो भी मैंने करके सब छोड़ दिया है। मतलब मैं खुश हूँ मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। Last ना question. मैम, कोई फनी इंसिडेंट जो हमसे बाइक राइडिंग की कॉलेज डेज में आपने काफी कुछ कहा है? Last question, ma'am. Like I'm just thinking nothing was funny there. It was quite lastly, ma'am, what safety measures would you like to share to the audience? I think every guy and every girl, whoever is, doing all the wheelies and stoppies and all that, just a request, my beautiful people. कॉलेज के दिन ना वो थोड़े होते भी है ना, वी आर लाइक विद दिस गरम खून, ऐसा कि हाँ हमारे हमको सब कुछ करना होता है उस वक्त लाइफ में, हम सबको अमिताभ बच्चन बनना होता है लाइफ में उस वक्त। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपके माँ बाप है पीछे, जब आपका वेट करते हैं, आप घर पे वापस जाओ, तो बस वो उतना आप सेफ्टी मेजर पकड़ के भी चलोगे ना, आप धीरे चलोगे। That's it, yes. Thank you. Last question, please. हाँ, मैं बिल्कुल बुलाऊंगी, मैं ज़रूर जाऊंगी। मैं खैर मैं दुबई में था। हाँ, मैम आपने 2 बार I've been a passionate rider myself for a pretty long time. I'm personally a Hayabusa fan, but I've been following World SBK, okay, and I'm a huge fan of Rats, both the Ducati team and the World SBK team. Ducati, I think the current owner is, the current champion is, no, World SBK is, I think, Rat Liogi or something like that. But World SBK is rocking in the super biking circuit, and so is Ducati. I'm looking forward to this particular. It's going to be the inaugural edition, right? So I'm sure it's going to be very exciting for someone who's been passionately following the World SBK and the Ducati racing. I am really looking forward to this one. So as you mentioned, like you are a big fan of bike racers. What are your favorite models? My personal all-time favorite is, a Hayabusa Kawasaki, but I'm also now in love with Yamaha and Ducati. Both are actually right now Ducati in the Ducati racing, and World SBK is led by Yamaha. So off late I've started liking these two also, but my all-time favorite has been Hayabusa. No, okay. And the commercial passengers, Yamaha RX100, we've grown up on that. Okay, there's nothing like that. उसकी जो kick वो जो उसकी एक stereotype trademark जो उसकी kick है, आज भी चला देंगे, 20 साल के बाद भी तो वैसी ही रहेगी. So RX100 तो हमारे खून में है, but from a racing point of view, Hayabusa has been my favorite all throughout. Ducati and Yamaha are now also, something that I'm following. Since the time I've started following World SBK, Yamaha has become one of my top favorites. Sir, DSBK has launched, like, they have started the league and also with the safety measures. And Right. we as in India, we don't have that, we are not that I educated agree. about racing. Get to know about them. Like, what are your views, like, when we drive a bike? Right. What the safety measures? So let me tell you, despite being a passionate biker myself, and also I've done a couple of Himalayan car rally seasons, I don't remember a single minute, a single moment when I would have not followed
complete driving instructions, including safety gear. Uh, when I'm out, I can actually drive at a speed of 220, 240, in a car. But I don't remember last when did I ever cross even 100, 120 on a clean highway. So I personally am very cautious, and I request everyone to follow the basic, and it doesn't take a lot of effort to understand, the basic standard safety hygiene protocols when it comes to either driving a car or riding a bike. One must. It should be, we must internalize it. It should run in our blood. So lastly, what would Absolutely like the way World SBK is set a completely different level. I'm sure it's going to be equal level of standard of execution. I'm looking forward, and I wish them a fantastic first inaugural season and a great amount of excitement. Looking forward. thank you so much. Right. Thank you. All the best. थोड़ा एक विजुअल करते हैं 2 मिनट मिला नहीं आपको नहीं मैडम उधर था ना ये कैमरा किधर आ गया Thanks, go ahead. मैम यार आपके लेफ्ट में यस मैम को इधर मैम थोड़ा डाउन नाइस लॉक इट Okay. Got everyone? बैठ लीजिए Got it? बाइक स्टार्ट करनी है बाइक स्टार्ट कर मैडम I wish I could have, but I'm very short. I cannot. I mean, trust me, I would have. Who said that? राइट हो जाओ राइट हो जाओ राइट हो Yeah, ट्रैफिक गाड़ी मत पूनम जी आइए गाड़ी में आइए चलो चलो मैम जाइए बाय No problem. Sorry. बाय बाय यही चीज